Hello students. So as you know that we have already started the chapter 1 of our book part B, political theory and introduction. Political theory and introduction. So the topics today that we will be completing, these topics are putting political theory to practice and why should we study political theory? Why should we study the political theory? So, in this textbook, we confine ourselves to one aspect of political theory that which deals with the origins, meaning, and significance of political ideas that we are familiar with, such as freedom, equality, citizenship, justice, development, nationalism, secularism, and so on. So, when we begin a debate or argument on any topic, we usually ask, what does it mean and how does it matter? So, political theorists have asked, what is freedom or equality and provided diverse definitions. तो हर political theorist ने जो है जो हमारी values हैं उनके अलग अलग जो है definitions दी हैं. So, unlike in mathematics, where there can be one definition of a triangle or square, we encounter many definitions of equality or freedom or justice. So, this is because terms like equality concern our relationships with other human beings rather than with the things. So, human beings, unlike, have opinions on issues like equality, and these opinions need to be understood and harmonized. So how do we about doing this? So let us begin with our common experience of equality in different places. So you may have noticed that people often jump the queue in shops or doctor waiting room or government offices. तो कई बार हम लोग कई बार डॉक्टर के पास जाते हैं या गवर्नमेंट ऑफिसेज के अंदर जाते हैं, बहुत सी बड़ी बड़ी लाइनें लगी होती हैं, तो कई लोग जो है जंप करके आगे की पहले सर्विस लेने की कोशिश करते हैं. तो sometimes those who do so are told to get back in line and we feel glad. और जब हम एक लाइन में पीछे लगे हुए हैं तो कोई व्यक्ति आगे गया तो उसको दोबारा कुछ लोगों ने किया कि वापस अपनी जगह पर जा, तब हमें थोड़ी सी अंदर से खुशी होती है. So sometimes they get ahead and we feel cheated. और कई लोगों को जब आगे जाकर उनका पहले काम हो जाता है तो हमें यूं महसूस होता है कि we people are cheated. So we resent this because we all want equal opportunity. अब हर व्यक्ति चाहता है कि equal opportunity मिले to get goods and services for which we are paying. जिसको हम लोग पे कर रहे हैं, जो opportunities हैं या goods है, हमें equality basis के ऊपर मिलना चाहिए. So when we reflect on our experience, we understand that equality means equal opportunity for all. At the same time, if there are separate countries for the old and disabled, we understand that such special treatment may be justified. तो ऐसी जगह पर जब हम भी लाइन में लगे हुए हैं या साथ में अलग से एक क्यू और बनी हुई है जिनका काम पहले हो रहा है, हमें लगता है कि वो बुजुर्ग हैं, ओल्ड हैं या डिसेबल्ड हैं, तो अगर हमारे से पहले जल्दी उनका काम हो रहा है, उनके लिए अलग से लाइन बनी है, तो हमें कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं होती, बिकॉज ऐसे लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए, तो ये जस्टिफाइड है. So but we also notice every day that many poor people cannot go to the shop or to a doctor because they have no money to pay for goods and सर्विसेज. तो हम अपने आसपास बहुत से गरीब लोगों को देखते हैं जिनके पास पैसा नहीं है, जो गुड्स नहीं खरीद सकते, सर्विसेज नहीं खरीद सकते. तो सम ऑफ दिस पीपल कुड बी day laborers who are cutting stones or lugging bricks for long hours. So if we are sensitive, we feel that it is not fair that in a society some members
Some members cannot even have their basic needs satisfied. We came to realize that equality must involve some kind of fairness so that people are not unduly exploited and disadvantaged by the economic factors. So consider the fact that there are many children who cannot go to school. हम अपने आसपास बहुत से लोगों को देखते हैं, ठीक है, कि बहुत से ऐसे बच्चे, गरीब बच्चे होते हैं जो स्कूल नहीं जा पाते बिकॉज दे हैव टू वर्क टू फीड देमसेल्व्स, क्योंकि उन्हें जो है अपने परिवार का भरण पोषण करना पड़ता है. So consider the fact that there are many children who cannot go to school because they have to work to feed themselves. And most girl students in poor households are pulled out of school to care for their younger siblings while parents go to work. तो बहुत से ऐसे केसेस हम लोग गांव के अंदर या लेबरर्स फैमिलीज की देखते हैं कि जहाँ पे लड़कियां घर के अंदर जो है घर के कामकाज कर रही हैं, ठीक है, अपने छोटे भाई बहनों को संभाल रही हैं क्योंकि पेरेंट्स को जो है काम करने के लिए जाना पड़ता है. तो इवन दो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू प्राइमरी एजुकेशन फॉर ऑल, हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन सबके लिए फ्री किया हुआ है, बच्चों के पास राइट है प्राइमरी एजुकेशन का. सो even though the Indian constitution guarantees the right to primary education for all, this right remains formal. So again we may feel that the government should do more for such children and their parents so that they are unable to go to school. तो हमें लगता है कि अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है ताकि वो भी जो है आराम से पढ़ लिख सके, ठीक है, अपने पैरों पे खड़े हो सके. तो गवर्नमेंट को चाहिए और ज्यादा जो है कुछ किया जाना चाहिए. सो thus you may see that our idea of equality is quite complex. So when we are queue or playground, we want equal opportunity. चाहे हम क्यू में खड़े हैं, चाहे हम किसी प्लेग्राउंड के अंदर कोई गेम खेल रहे हैं, तो हमें रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करवाना गवर्नमेंट का फर्ज बनता है कि रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं तो उनको फॉलो किया जाना चाहिए और हर व्यक्ति को हर जगह के ऊपर जो है इक्वालिटी मिलनी चाहिए ताकि वो किसी प्रकार का कोई सफर ना करे. सो इफ वी सफर फ्रॉम सम डिसेबिलिटी, वी वांट स्पेशल प्रोविजंस मेड. Students, if we see that we are disabled and we want special provisions made. So when we cannot even afford basic needs, equal opportunity is not enough. We must be enabled to go to school or get help through proactive measures such as fair distribution of resources. तो fair distribution जो है समाज के अंदर resources का होना चाहिए, चाहे वो जॉब्स हैं, चाहे decent wages हैं, चाहे subsidized hospitals etc. ठीक है. So this requires that some agencies be made responsible to ensure फेयरनेस. और गवर्नमेंट को चाहिए कि लोगों को इक्वालिटी मिल सके. तो जो भी रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो गवर्नमेंट को चाहिए उनको ऊपर चेक करने वाले ऑफिसर्स हों ताकि वो देख सके कि लोगों को इक्वालिटी के बेसिस के ऊपर रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं या नहीं दिए जा रहे हैं. सो द रीजन वी हैव मेनी डेफिनेशंस is because the meaning of equality is dependent on the context. We started with what it means for ourselves and then proceeded to consider others. So we discovered many layers of meaning. We have been doing political theory without realizing it. So political theories clearly or clarify the meaning of political concepts by looking at how they are understood and used in ordinary language. So they also debate and examine the diverse meanings and opinions in a systematic manner. So when is equality of opportunity enough? When do we people need special treatment? How far and how long should such special treatment be given? So should poor children be given midday meals to encourage them to stay in schools? So these are some questions which
they address. As you can see, these issues are eminently practical. They provide guidelines for framing public policies on education and employment. So, as in the case of equality, so also in the case of other concepts, political theories engage with everyday opinions, debate possible meanings, and thresh out policy options. Freedom, citizenship, rights, development, justice, equality, nationalism, and secularism are some of the concepts that we will discuss in the following chapters. The next our topic is for today is why should we study political theory? हमें political theory क्यों पढ़नी चाहिए? We may have political ideas, but we need to study political theory. हमारे पास कितने भी political ideas क्यों ना हो, फिर भी हमें political theory का पढ़ना क्यों जरूरी है? Is it not more suited for politicians who practice politics? तो क्या जो politicians हैं, जो politics practice करते हैं, उनको ये political theory नहीं पढ़नी चाहिए? और फॉर ब्यूरोक्रेट्स हु मेक पॉलिसीज, या उनको नहीं पढ़नी चाहिए जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो पॉलिसीज बनाते हैं? और फॉर दोज हु टीच पॉलिटिकल थ्योरी, या जो पॉलिटिकल थ्योरी को टीच करते हैं? और फॉर लॉयर्स एंड जजेस हु इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज, या जो लॉयर्स हैं या जजेस हैं जो इंटरप्रेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, जो इंटरप्रेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को या लॉज को, क्या उनको पढ़ना जरूरी नहीं है पॉलिटिकल थ्योरी? Or for activists and journalists who expose exploitation, so and demand new rights. What do we gain by knowing the meaning of freedom or equality? तो हमें क्या मिलता है जब हमें कोई मीनिंग मिल जाता है फ्रीडम या इक्वालिटी का? तो हमें उससे क्या फायदा होता है? सो क्या फायदा रहता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉलिटिकल थ्योरी इज रेलेवेंट फॉर ऑल द अबव टारगेट ग्रुप्स. As high school students, we may choose one of the above professions in the future, and so indirectly it is relevant for us even now. So do we not learn mathematics, although not all of us will become mathematicians or engineers? Still we study the maths, and so it is not because the basic arithmetic is useful to life in general. So किसी भी व्यक्ति को जो है पॉलिटिकल थ्योरी का पढ़ना बहुत जरूरी है. तो सेकेंडली यहाँ पे हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं. वी आर ऑल गोइंग टू बी सिटीजंस एंड एंटाइटल्ड टू वोट एंड डिसाइड अदर इश्यूज. तो पॉलिटिकल थ्योरी का पढ़ना क्यों जरूरी है? हम आगे चलकर देश के एक नागरिक बनेंगे, हमें वोट का अधिकार मिलेगा, ठीक है, हम इश्यूज के ऊपर जो है अपना डिसीजन देंगे. टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली, हम लोग सही ढंग से उन चीजों को रिस्पॉन्सिबली एक्ट कर सकें. So it is helpful to have a basic knowledge of the political ideas and institutions that shape the world we live in. So in the information society, it is crucial that we learn to be reasonable and informed if we are to participate in Gram Sabhas or offer our views on websites and polls. So if we simply express arbitrary preferences, we will not be very effective. But if we are thoughtful and mature, we can use the new media to discuss and express our common interests. तो हमें जो है पूरा अवेयर होंगे तो हम लोग सोशल मीडिया को भी सही ढंग से इस्तेमाल कर पाएंगे. तो एज सिटीजन्स वी आर बिट लाइक द ऑडियंस इन अ म्यूजिक कंसर्ट. तो हम सिटीजन्स किस रूप में हैं? जैसे एक म्यूजिक कंसर्ट के अंदर ऑडियंस बैठे होते हैं. We are not the main performers interpreting the song and melody, but we set the agenda and appreciate the output and put in a new request. So have you noticed that musicians perform better when they know the audience is knowledgeable and appreciative? तो किसी भी कंसर्ट के ऊपर हम जाते हैं, ठीक है, तो म्यूजिक या परफॉर्म करने वाला जो होता है ओपेरा हाउसेस के अंदर, तो अगर वो देखता है कि मेरा ऑडियंस बड़ा पीसफुली है, नॉलेजेबल है, अप्रिशिएट करने वाला है, तो परफॉर्मेंस और ज़्यादा अच्छी हो जाती है. सो ऑल्सो एन एजुकेटेड एंड विजिलेंट सिटीजन्स मेक दोज हु प्लेस पॉलिटिकल्स मोर पब्लिक स्पिरिटेड. और एजुकेटेड और पढ़े लिखे और विजिलेंट सिटीजन्स जो हैं वो पॉलिटिक्स को या डेमोक्रेसी को और बेहतर बनाते हैं. थर्डली वी सी
Freedom, equality, and secularism are not abstract issues in our lives. We daily encounter discrimination of various sorts in families, schools, colleges, shopping malls and so on. बहुत सा discrimination हम अपने जीवन के अंदर देखते हैं. We ourselves have prejudices against people who are different from us, be they of a different caste or religion or gender or class. If we feel oppressed, we want it addressed, readdressed, and if that it is delayed, we feel violent revolution is justified. तो कई बार हम लोग देखते हैं कि हमारे साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है, कई बार हम बहुत वायलेंट भी उसको लेकर हो जाते हैं. सो इफ वी आर प्रिविलेज्ड, वी डिनाई दैट देयर इज एनी ऑपरेशन इवन एज आवर मेड्स एंड सर्वेंट्स स्ट्रगल फॉर डिग्निटी. तो हमारे पास जो है कुछ विशेष अधिकार जो है होने चाहिए. तो ऐसे ही हमें विशेष अधिकार उन लोगों के भी देने चाहिए जो हमारे घर के अंदर काम करते हैं, मेड्स के रूप में, सर्वेंट्स के रूप में. हमें उनका भी सम्मान रखना पड़ेगा. तो समटाइम्स वी इवन फील दैट आवर सर्वेंट्स डिजर्व द ट्रीटमेंट दे गेट. What political theory encourages us to do is to examine our ideas and feelings about political things. So just by looking at the more carefully, we become moderate in our ideas and feelings. So finally, as students, we enjoy debates and elocution competitions. We have opinions about what is right or wrong. So just or unjust, but do not know whether they are reasonable or not. So only when we argue with others, we realize the need to defend them and seek out reasons and arguments. So political theory exposes us to systematic thinking on justice or equality so that we can polish our opinions and argue in an informed manner and for the sake of common interests. So such skills of debating rationally and communicating effectively are likely to be great assets in the global information order. So students, we have completed our chapter Part B, Chapter 1, Political Theory and Introduction. And today we have completed the two remaining topics of this chapter, putting political theory to practice, and why should we study political theory? Why should we study the political theory? So thank you students, thank you and have a nice day. Thank you.